Hello class 8 students, I am your math teacher Nitin. In today's class we will start our chapter 9, new chapter, understanding shapes. We are in lecture 1, chapter 9, understanding shapes. Now in this chapter we will learn about different type of quadrilaterals. Okay, quadrilaterals. Now quad means 4. So any four-sided closed figure is known as quadrilateral beta. Okay, any four-sided closed figure is known as quadrilateral. Let it be A, B, C and D. So any four-sided figure is known as closed figure is known as quadrilateral. Okay beta. Now if I say adjacent sides का मतलब क्या है? Adjacent side means any two sides having common vertex. कॉमन वर्टेक्स किस कौन सी साइड का है? AB का है और AD का है. सो AB and AD are adjacent side. सिमिलरली बेटा अगर मैं B पॉइंट B वर्टेक्स लेता हूं तो AB and BC they are adjacent side. अगर हम D लेते हैं बेटे D को हम वर्टेक्स लेते हैं, at D is the vertex, then the common sides are, then the adjacent sides are AD and CD. फोर्थ अगर हम C को वर्टेक्स लेते हैं at this point, तो here two sides adjacent sides are BC and CD. क्लियर है बेटे? सो दीज आर द एडजेसेंट साइड. कॉमन वर्टेक्स है तो जो कॉमन वर्टेक्स पे दो लेंथ आके मिलती हैं वो दोनों एडजेसेंट साइड मानी जाती हैं, कही जाती हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज ऑपोजिट साइड? ऑपोजिट साइड, सो एनी टू साइड विच आर अपोजिट टू ईच अदर आर ऑपोजिट साइड बेटे. AB is opposite to CD, right? And AD is opposite to BC. ये इसके अपोजिट है और ये वाला लेंथ इसके अपोजिट है, तो ये अपोजिट साइड होता है बेटे. क्लियर है? नाउ अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. अपोजिट एंगल कौन से होंगे बेटे? अपोजिट एंगल बेटे ये वाला एंगल A एंड एंगल C. दिस एंगल A and angle C are opposite to each other. Similarly, angle B and angle D, they are opposite angles because they are also opposite to each other. Clear है बेटे? तो opposite angles क्या होते हैं? Opposite angle A and angle C are opposite. Second, angle B and angle D are opposite angles in a quadrilateral. Clear to you beta? Good. Now adjacent angles. Adjacent angles कौन से होते हैं बेटे? Now adjacent angles are those angles which are on the same base. Base same होना चाहिए. Angle A and angle D. Angle A and angle D are adjacent angles. Similarly बेटा अगर हम B पॉइंट लेते हैं ये वाला, तो इसके ऊपर कौन से एंगल बनते हैं? एंगल A and एंगल B, they are also adjacent angle बेटे. एंगल A and एंगल B, they are adjacent. अगर हम साइड BC लेते हैं तो एंगल B and C they are adjacent, और अगर हम साइड CD लेते हैं तो बेटा एंगल D and C are एडजेसेंट एंगल्स. क्लियर हो गया बेटे? जो कॉमन आर्म पे जो एंगल होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं. जैसे कि A और D है, A और D कॉमन होते हैं. A और D एक ही आर्म पे हैं तो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स. A भी अगर आर्म रहते हैं तो एंगल A और एंगल B एक ही आर्म पे बन रहे हैं तो दे आर एडजेसेंट एंगल्स. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स वी विल लर्न अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एंगल सम प्रॉपर्टी of quadrilateral. Now suppose this is the quadrilateral A, B, C and D. So angle sum property says that the sum of all the four angles of the quadrilateral
is equal to 360 degree. That is angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Right? So this is the angle sum property beta. Is it clear? Now what is interior and exterior to the quadrilateral beta? So any point within the boundaries is known as interior. Suppose ये point P है, ये point P in boundaries के अंदर है, then this point P is known as interior to the quadrilateral. Okay, P is interior point जो boundaries के अंदर है, that is interior point. अगर कोई बाहर है बेटा, let it be Q, तो हम बोलेंगे Q is exterior to exterior point of quadrilateral. जो अंदर है that is interior और जो outside है that is exterior. Angle sum property I told you, the sum of all the angles of the quadrilateral are 360 degree. Correct बेटे? Now student, one more thing, if I produce the side of this quadrilateral, अगर हमने ये इसको extend कर दिया, ये extend कर दिया, ये extend कर दिया और ये side को extend कर दिया, तो ये जो मेरे exterior angle बनते हैं बेटे, इनका सम भी कितना होता है? They are also equal to 360 degree बेटे, right? Now student, we will do one example based on the angles of the quadrilateral. Now the example is given in your book, it is on page number 159. Now the question is the four angles of the quadrilateral are in the ratio. Four angles हमको given है, four angles given नहीं है, उनका ratio given है. तो ratio of the four angles is how much? That is 2:3:5:8. This is the ratio of the four angles of the quadrilateral. Now let angles be, हमको रेशियो को किस में कन्वर्ट करना है? एंगल में. एंगल कितने हो जाएंगे? 2x, 3x, 5x and 8x. Now you have to find out the angles. Question is find the angles of the quadrilateral. हमको रेशियो गिवन है बेटे, रेशियो बिटवीन दीज एंगल्स. नाउ हमने इसको x से मल्टीप्लाई करके एंगल में कन्वर्ट किया. करेक्ट? नाउ वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ quadrilateral is equal to 360 degree. So 3 plus 2 5, 5 plus 5 is 10 plus 8, that is 18x is equal to 360 degree. X will give you how much? 360 upon 18, 18 2s are 36, 0. What is the value of x? X is equal to 20. Okay बेटे? Now x is equal to 20, that is 2x. हमको एंगल फाइंड आउट करना है बेटा. फर्स्ट एंगल वाज हाउ मच? 2x. तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, दैट इज 20. तो फर्स्ट एंगल मेरा 40 डिग्री का आता है बेटे. नाउ सेकंड एंगल 3 into 20, दैट इज 60 डिग्री का आता है बेटे. एंड देन द फोर्थ एंगल इज 5x. सो 5 into 20 is equal to 100. एंड द लास्ट वन इज 8x. 8 into 20, that is 160. So these are the four different angles, 1, 2, 3 and 4. So we will do these questions in this way beta. Now student, come to your exercise 9.1. Now the question number 1 is the angle of the quadrilateral are, find the value of x. Simple question beta. Any quadrilateral you have. Now the three angles are given to you. Let it be A, B, C and D. First angle is how much? 110. Second is 72. Third one is 55. And the fourth one is x. You have to find out the value of x. Now as I told you, using angle sum property, you can find out the value of x beta. You know that angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Why? Angle sum property beta. ASP हमने यूज किया. Now we will add them. 110 plus 72 plus 55 plus x is equal to 360, right?
5 plus 2 is 7. 7. 7 plus 5 is how much? 7 plus 5, 12 plus 1, 13. 1 carry over. 1 plus 1, 2. एक बार चेक करते हैं बेटे. 110, 72 and 55. 7, 7, 12, 13, 237. Yes. 237 plus x is equal to 360 degree. Now x का वैल्यू कितना आएगा बेटा? x is equal to 360 minus 237. So 10 minus 7 is 3. 5 minus 3 is 2. 123. x का वैल्यू कितना आया बेटे? x is equal to 123 is your answer. Correct बेटे? Now question number 2. This was question number 1. Come to question number 2. The one angle of the quadrilateral is 108. एक एंगल दिया हुआ है मुझे, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 108 एंड द रेस्ट ऑफ एंगल्स आर इक्वल. सारे एंगल इक्वल है. अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. बेटे ए कितना है? 108 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360. तो ये हो जाएगा 108 प्लस 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री. 108 हम इसको ट्रांसपोज करेंगे बेटे. 360 माइनस 108 हाउ मच? दैट विल बी 2. 5 में से 0 गया, 5 में से 0 गया 5. 3 माइनस 1 is 252. What will be the value of x is equal to 252 upon 3. 3 8s are 24 and 3 4s are 12. 84. So rest of the angles are equal and each angle is equal to 84 degree. This is your answer bete. Now student come to question number 6. Rest of the question 3 and 4 we have done as examples. जैसे example किए हैं बिल्कुल same questions हैं. Now the question number 6, in the adjoining figure ABCD is a quadrilateral. Figure given है बेटे हमको. फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है. This is A, B, C and D. Okay. Now this is O. D is given to you 40 degree. This is 60 degree. Bisector of angle A and B meet at O. These are the bisector. Both these angles are equal बेटे. ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है. ठीक है. Now the question is find angle AOB. You have to find out angle AOB. हमको find out करना है. Okay. Now in the adjoining figure ABCD is a quadrilateral. The bisector of angle A and angle B meet at O. Find angle AOB. Angle A and angle B are equal. This is given to us beta. ये angle equal है. Okay. It is given to us that both angle A is equal to angle B. Mark किया हुआ है बेटे बुक में. Now by using angle sum property we will find out, first we will find out the value of angle A and B. Now 40 plus 60 plus angle A plus angle B is equal to 360 degree. 60 plus 40 is 100. 100 plus twice of angle A, because A and B are equal, is equal to 360 degree बेटे. Twice of angle A is equal to 260 degree. Angle A is equal to 2 1 2 2 6 0. Angle A is equal to 130 degree बेटे. और ये बाइसेक्टर है. Angle A is equal to angle B, तो angle B भी 130 degree होगा बेटे पूरा का पूरा. Now they are the bisectors now. Half of angle A, bisector means half. तो 130 upon 2 is how much? 2 6 are 12. 2 6 are 12. 2 5 are 65. This is 65. This is 65. ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है. ओके. नाउ इन ट्रायंगल AOB, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल
बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी बेटे, हमने मालूम है ना एंगल सम प्रॉपर्टी। वी विल राइट द रीजन। एंगल ए इज हाउ मच 65 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 65 और 65 इधर लेके आएंगे दैट इज 130। सो एंगल ओ इज इक्वल टू हाउ मच बेटे 50 डिग्री। 50 डिग्री इज द आंसर, करेक्ट, गुड। Okay. Now student, exercise 9.1 is over. Do each and every questions neatly in your copies. Your copies will be checked by your teachers. Okay. Now students, we will learn about various type of quadrilateral. We have different type of quadrilateral. We will learn them now. So first one is trapezium. Now what is trapezium beta? Now see, A, B, C and D is a trapezium. One side is parallel to each other, one pair of side is parallel to each other and the other two sides are non-parallel. They may be equal or they may not be equal. Okay, if these non-parallel sides are equal, then the given trapezium is known as isosceles trapezium, otherwise it is normal trapezium. Okay, is it clear to you beta? One pair of side is parallel in trapezium. If other two non-parallel sides are equal, then this is known as isosceles trapezium, otherwise not. Okay, this is the first one, trapezium. Now come to the kite. Second type is kite. Now I am drawing the figure in front of you. A, B, C and D. Adjacent sides are equal. AD is equal to AB. Adjacent side यानी कि कॉमन वर्टेक्स वाली साइड इक्वल होती है बेटे. AD is equal to AB and CD is equal to BC. Okay beta. So such type of figure is known as kite. Now the third figure is parallelogram beta. Now what is a parallelogram? I am drawing a figure in front of you. A, B, C, D is the name of this quadrilateral. Now this is parallelogram. What are the properties beta? Opposite sides are parallel and equal. Okay, AB is parallel to CD and AB is equal to CD. Parallel भी होंगे और equal भी होंगे. Okay, second, AD is parallel to BC and AD is also equal to BC. Correct? Opposite sides equal and parallel होती हैं. First property. Now third property is the sum of the interior angles, a sum of the opposite angles. Opposite angles are equal. Opposite angle are equal in parallelogram. Okay, now angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. कोई भी पैरेललोग्राम होगा बेटे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, राइट. एंगल D is equal to angle B. Now the fourth property बेटे, diagonals they bisect each other. Okay, diagonals of parallelogram, शॉर्ट में हम पैरेललोग्राम को साइन देते हैं, bisect each other. Bisect means इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, bisect each other. Okay, that means AO is equal to OC. Suppose they meet at O
अगर ये दोनों डायगोनल ए सी और बी डी एक पॉइंट पे मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज ओ, इन दैट केस ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी. Correct? So these are the four properties. As one more thing, diagonal bisect the quadrilateral into two equal triangles. ये fifth property है, याद रखिएगा. Both diagonals they bisect the quadrilateral into two equal triangles. Okay. Now student, we will learn about special kinds of parallelogram. Now the first one is rectangle. आपने rectangle देखा है, you have drawn many times. तो it is a special type of the parallelogram. Now what are the properties of rectangle बेटे? This is rectangle. Now all corner angles, corner angle means angle A, angle B, angle C and angle D. Angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree each. Each corner angle is 90 degree bete, and the diagonals they are equal. This is what the first property. Second, diagonals are equal. AC is equal to BD. Rest all the properties of parallelogram are applicable on rectangle. That means opposite sides are equal and parallel, opposite angles are equal, except those properties which we discussed in parallelogram, वो तो सारी हैं ही हैं. उसके अलावा corner angles are 90 degree and the diagonals they are equal in rectangle. Okay, four properties जो हमने पहले की हैं, that is opposite sides are equal and parallel, वो भी यहाँ है. Opposite angles are equal, वो भी इधर है बेटे, right? And diagonals are equal and the diagonals they intersect each other. ये O point पे intersect करेंगे बेटे. तो rest all other properties of parallelogram वो तो है ही हैं, plus corner angle 90 degree and diagonals are equal additional है rectangle में. Clear है बेटे? Now the second type of special parallelogram is rhombus. Now rhombus, this is rhombus A, B, C, D. Now in rhombus all four sides are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. All four sides are equal just like square. The diagonals they bisect each other at 90 degree. ये 90 degree है बेटे, let it be O. So diagonals bisect each other at at 90 degree. ये 90 degree इधर बनाते हैं बेटे at point O. तो diagonal bisect तो करते हैं और bisect करने के बाद 90 degree बनाते हैं बेटे, ठीक है, 90 degree. Clear है? Opposite angles are equal, वो तो है ही, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वो सब प्रॉपर्टी एज इट इज है. एडिशनल क्या है बेटा कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस. लर्न देम बाय हार्ट बेटे. ओके. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द पैरेललोग्राम इज स्क्वायर बेटे. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर? A, B, C and D. This is a square. All four corner angles are 90 degree just like rectangle. Angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D 90 degree each. सारे corner angles बेटे 90 degree होते हैं. Okay, this is the first property. Second, all four sides are equal. सारी साइड्स इक्वल होती हैं बेटा, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. करेक्ट. नाउ द डायगोनल्स दे आर ऑल्सो इक्वल बेटे. ए सी इज इक्वल टू बी डी. ओके. एंड
diagonal intersect at 90 degree. Angle A diagonal intersect at 90 degree. ये बेटा 90 डिग्री इधर भी है, क्लियर है? Now student, learn all the properties of the parallelogram by heart. Because अगर आपको parallelogram की properties नहीं आती हैं, then it will be very difficult to do the questions. So learn all the properties of parallelogram by heart. Square में rectangle में क्या difference है? Okay, one thing more, all squares are rectangle. ये आप याद रखिए, all squares are rectangle. Clear है बेटे? All squares are rectangle, so do remember this point. क्या बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि क्या स्क्वायर रेक्टेंगल है, yes or no? तो yes, all squares are rectangle. Why? अपोजिट साइड्स इक्वल है, कॉर्नर एंगल, जो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर भी है. दैट्स व्हाई स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल. सो डू रिवाइज ऑल दीज प्रॉपर्टीज बेटा. दीज प्रॉपर्टीज विल बी वेरी हेल्पफुल इन डूइंग द एक्सरसाइज. ओके, बाय बाय, टेक केयर.